Hi guys, happy Valentine Day to everyone. So if you have your Valentine, do wish them. But दो चीज़ों का आपको और ध्यान देना है. एक तो नंबर वन, प्लीज डू विश योर पेरेंट्स एज वेल. सो पेरेंट्स, योर फैमिलीज, योर ब्रदर सिस्टर और एवरीबडी इज पार्ट ऑफ द Valentine Day. यार वी डू लव आवर पेरेंट्स बट वी डोंट नॉर्मली एक्सप्रेस. सो आज मैंने अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट दिया, दोनों को एक एक, मम्मी को पापा का, दोनों को एक एक गिफ्ट दिया है. सो डू इट फॉर योर पेरेंट्स, डू इट टू द पेरेंट्स एज वेल, एक्सप्रेस योर लव टू द पेरेंट्स आल्सो. नंबर टू, डू एक्सप्रेस योर लव टूवर्ड्स CAT CET CMAT, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो. सी, Valentine Day is not about meeting your Valentine mean love is not about meeting your guy or a girl every day. Love is about thinking about them every day, every moment. Same way, if you can fall in love with CAT CET exam, trust me, they will love you back. जितना तुम हेट करोगे और तुम्हारा हेट्रेड इंक्रीज होता जाएगा. सो rather than hating it, start loving it. The more and more you love it, more and more it will reward you with better marks, better this thing. So रोज सुबह उठ के एक टेस्ट देते जाओ, एक सेक्शन वाइज टेस्ट देते जाओ. Start loving the exam. ठीक है, एटलीस्ट लव ना करो तो हेट तो मत करो यार. This is what I say about the maths as well. If you don't need to love maths, you just need to be okay with it. जिसको प्यार है अच्छा, जिसको मैथ अच्छा लगता है वेरी गुड. जिसको मैथ्स पसंद नहीं है एटलीस्ट हेट्रेड मत करो, बिकॉज यू नीड इट मोर देन मैथ्स नीड यू नीड मैथ्स राइट नाउ. सेम वे वी नीड टू क्रैक द एग्जाम, वी नीड देयर सपोर्ट राइट नाउ. सो फोकस ऑन दैट. सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे अगेन टू ऑल माई स्टूडेंट्स. ऑल द बेस्ट.